Hello guys, welcome back to my channel. Today we're going to learn about a new cue card of 2022. This is the latest cue card from September to December. Okay, this is the cue card about describe a time when you missed an appointment. The appointment sigi that you totally forget that. Okay, this is the story about the appointment. My name is Gurbhej Jassar and I'm a speaking tutor. If you are new here, please subscribe my channel and share my videos. So let's start today's video. Okay, in this cue card, I explain each and everything in a sequence wise, so it's quite easy for you to understand the story. This is a story about appointment. Okay, in intro, well, in today's fast-paced life, individuals are being immersed in their mundane affairs and they always forget their significant appointments. This is the kind of typical intro. Maybe it's quite difficult for you to understand, but you can use your own thing. Okay, in this story I explain each and everything in a sequence wise. Last month I had a pain in my toe. Okay, and I visited a hospital, but I didn't got appointment because of too much rush over there on that particular day. So I got appointment after 2 weeks. Reason किसी का मैंने appointment उस दिन नहीं मिली है because बहुत rush थीगा, so I got appointment after 2 weeks. Okay, a week later I got that one of my cousin get married on next week. भी मेरे किसी cousin का next week married सी, तो मैंने वो एक week पहला ही पता चला है. I visited his house in a next city. भी जो साढ़े नाली city भी सी है, या कह सकते हैं कि next state या चंडीगढ़, लुधियाना, whatever you like, you can explain that thing. Okay, his parents, or you can say that my relatives, gave me some obligations, that means responsibilities, regarding decoration, meals and dress. Dresses means जो groom की dress होगी. Okay, ये सारी responsibilities हैं for the relatives में, and you can say that his parents gave me some responsibilities. Okay, I totally forgot my appointment. भी ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ indulge ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ marriage, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੀਗੀ appointment forget ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ totally. Okay, I was totally busy in my domestic work. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ busy ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ appointment ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ. After 2 days from the appointment, ਵੀ appointment ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ I totally forgot my appointment. I suddenly remind myself that I had appointment. ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ appointment ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ. Okay, so I visited doctor after 3rd day of the marriage. ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਜ਼ਿਟਡ ਹਸਪੀਟਲ ਐਂਡ ਗॉट ਅ ਨਿਊ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ. ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ. ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈ ਗॉट ਅ ਨਿਊ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆਫਟਰ 5 days or after 6 days is upon you. Okay, ending is here. So that was the time when I missed my appointment. ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ. ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੈਰਿਜ ਕਰਕੇ. ओके, फिर तो न्यू अपॉइंटमेंट मिली हैगी आफ्टर 6 days, आफ्टर अ वीक, कुछ भी कह सकते हैं. ओके, इन विच 2 or 3 आइडियाज़ होर भी हैगे. यू कैन एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. पासपोर्ट वेरीफिकेशन वास्ते अपॉइंटमेंट सीगी, तुसीं ओह मिस करता सीगा. रीजन सेम दे सकते हैगे. इन विच तुसीं ब्याह दा कह सकते हैगे या किते मीटिंग दा कह सकते हैं. ओके, या कह सकते हैं पुलिस वेरीफिकेशन होनी सीगी, ओह अपॉइंटमेंट सीगी, ओह भी कह सकते हैं. ओके, सारी स्टोरी है तुम इस रिगार्डिंग बना सकते हैं. जे तेरे को कोई न्यू आइडिया है, यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो सो वी कैन क्रिएट अ न्यू वीडियो फॉर यू. जो कोई न्यू आइडिया है तब उससे जनरेट कर लेंगे आइडिया. ओके, वेल दिस इज एंड ऑफ द क्यू का. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो. सो थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.